Hello viewers, the question is figure shows the series LCR circuit connected to a variable frequency 230 volt source. L is equal to 5 Henry, C is equal to 80 microfarad, R is equal to 40 ohms. Part A, determine the source frequency which drives the circuit in resonance. Part B, obtain the impedance of the circuit and the amplitude of the current at the resonant frequency. Part C, determine the RMS potential drop across the three elements of the circuit. Show that the potential drop across the LC combination is zero at the resonant frequency. So let us solve the parts one by one. First of all, we have to determine the source frequency which drives the circuit in resonance. It means that we have to calculate the resonant frequency. Now the resonant frequency is given by formula omega is equal to 1 upon square root LC. Now putting the respective values here, the value of L is given as 5 Henry. The value of C is given as 80 microfarad, which when converted into farad is 18 to 10 to the power minus 6. So after solving this, this comes out to be square root of 400 into 10 raised to the power minus 6, which is equal to 1 upon 20 into 10 raised to the power minus 3, which is equal to 1000 upon, this is 1000 upon 20. So this comes out to 50 radians per second. So this is the answer of the first part of this problem. तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमें आरएलसी सर्किट दिया गया है, एल सी और आर की वैल्यूज गिवन है. सबसे पहले पार्ट हमें यहाँ बैटरी की वोल्टेज भी दे रखी है, ये एसी सोर्स की वैल्यू दे रखी है 230 वोल्ट सोर्स है. और यहाँ पे सबसे पहले हमसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, यानी सोर्स फ्रीक्वेंसी जिससे कि सर्किट रेजोनेंस में आ जाए. रेजोनेंस मीन्स इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए और सर्किट जो है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करे. तो उसके लिए फॉर्मूला होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट LC. एल और सी की वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है 50 रेडियन पर सेकेंड. तो हमारे पहले पार्ट का इसका आंसर हो जाएगा. नाउ द बी पार्ट. इन द बी पार्ट वी हैव टू ऑब्टेन द impedance of the circuit and the amplitude of the current at the resonant frequency. Now the impedance of the circuit is purely resistive. At the resonant frequency, the circuit behaves as a purely resistive circuit because the inductive and capacitive reactances XL and X of C have equal values but the opposite sign, so they cancel each other, and the circuit impedance is purely resistive, and we can say that the impedance in this case is equal to the value of the resistance. So the value of resistance is given as 40 ohms. So we can say that 40 ohms is the impedance value at the resonance condition. And we have to also calculate the amplitude of the current. First of all, the RMS value of current is basically VRMS divided by the impedance. Impedance here in this case is the resistance. So VRMS upon 40. VRMS is given as 230 and divided by 40. This is the IRMS value. But we have to calculate the amplitude of current. It means that we have to calculate the value of I, which is equal to the root 2 multiplied by IRMS value. You have to calculate the peak current basically. So peak current is equal to square root 2 multiplied by IRMS. So this comes out to be 230 upon 40 multiplied by 1.414. So this value comes out to be nearly equal to, this value is nearly equal to 8.1 amperes. 8.1 amperes, this is the value. तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि इम्पिडेंस बताइए सर्किट की क्या होगी, साथ के साथ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा. तो इम्पिडेंस इस केस में प्योरली रेजिस्टिव जो इम्पिडेंस ली जाएगी, प्योरली रेजिस्टेंस की वैल्यू ली जाएगी क्योंकि इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस कैंसिल आउट हो रही हैं. तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वही इम्पिडेंस की वैल्यू होगी इस केस में. दूसरे इसमें ये भी पूछा गया है एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट. तो सबसे पहले हम आरएमएस करंट निकाल लेंगे, वीआरएमएस अपॉन जेड, वीआरएमएस अपॉन द रेजिस्टेंस, तो ये जाएगा 230 अपॉन 40 और आई यानी पीक एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बराबर होगा स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय आईआरएमएस. तो ये वैल्यू निकल के आती है 8.1 एम्पियर. तो इस तरह से बी पार्ट हमारा सॉल्व हो गया. अब आते हैं सी पार्ट पे. डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द थ्री elements of the circuit. So in this particular part we have to calculate the voltage drop across each element. So in the C part, first of all the voltage drop across the resistance. Voltage drop across the resistance is I multiplied by the resistance value. I multiplied by the resistance value. So I multiplied by the resistance means the current. So the current is basically 230 upon 40. This multiplied by, this value is multiplied by the value R. So this comes out to be, this value comes out to be
230 volts. 230 volts. So this is the voltage across the resistance. This is the RMS value of the voltage, basically 230 volts. Now the VL is basically I multiplied by X of L, where X of L is the inductive reactance. First of all, the current is 230 upon 40. This multiplied by XL is basically omega into L. Omega which we have calculated earlier as 50 radians per second. So 50 multiplied by L is given as 5. This is given as 5. So after solving this, this value comes out to be 0, cancels with this 0, and this value comes out to be 1437.5. This is the value of the voltage across the inductor. Similarly, we can calculate the voltage across the capacitor, which is given by I into X of C. So I is 230 upon 40, and the capacitive reactance is 1 upon omega C. It means that 1 upon 50 multiplied by the value of C. Value of C is given as 80 into 10 raised to the power minus 6. So after solving this value also comes out to be 1437.5 volts. So this is the voltage across the capacitor. Basically, these two voltages are opposite in sign. It means that they cancel each other. So the combined voltage across LC element, it is 0. So in one part of this problem, it is asked that what is the voltage across the LC combination. So LC combination voltage, the voltage across LC combination is equal to voltage across the inductor plus voltage across the capacitor. Now as we know that the sign are opposite to each other, that's why at a particular time instant the voltage across the LC combination is 0. So this is the answer of the fourth part of this problem, because first part is the resistance voltage, voltage across the resistance, second part is the voltage across the inductance, third part is the voltage across the capacitance, and the fourth part is the voltage across the LC combination. So it is equal to 0. तो इसके सी पार्ट में हमसे पूछा गया डिटरमाइन द आरएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट, यानी हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज पूछी गई है. तो अगर हम बात करें रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज तो होगी द करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. तो यहाँ पे आई और आर की वैल्यू पुट कर देंगे. आई है करंट है 230/40, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 40, तो ये आता है 230 वोल्ट्स. इसी तरीके से वीएल निकाल सकते हैं. वीएल होगा करंट मल्टीप्लाइड बाय द इंडक्टिव रिएक्टेंस. तो यहाँ पे करंट विच इज 230/40, इट इज मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा एल. एक्स ऑफ एल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होती है ओमेगा इंटू एल. ओमेगा हम फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं 50 रेडियंस पर सेकंड, और इसमें एल की वैल्यू हमें रखी है 5 हेनरी. तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा आंसर आता है 1437.5. फिर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगी आई इंटू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, आई इंटू एक्स ऑफ सी. तो यानी कि 230/40 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन ओमेगा सी. कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है 1 अपॉन ओमेगा सी. ओमेगा की वैल्यू पुट करी हमने 50, एंड सी की वैल्यू हमने फैराड में पुट करी 82 × 10⁻⁶. तो यहाँ से वैल्यू हमारी निकल के आती है 1437.5 वोल्ट्स. अब यहाँ पे जो इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसमें अपोजिट साइन होता है. ये बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट इन फेज होती हैं. तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर एक पॉजिटिव तो उस समय दूसरी नेगेटिव होगी. तो इस तरह से अगर कंबाइंड मैनर में हम देखें तो कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंसेस जो है उस तरह से है कि वो उनकी वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उनके साइन अपोजिट है. दैट्स वाई इनके अक्रॉस जो वोल्टेजेस का कॉम्बिनेशन या सम है, सम अक्रॉस द वोल्टेज एल एंड सी एलिमेंट, तो वो बराबर होगा 0. तो इस तरह से इस पार्ट का आंसर हो जाएगा 0. V across LC combination is 0 volts. So this is the whole explanation of this problem. Hope you understand it. Thank you.